Alright, so hello, what's up, guys? This is Vandit and this is my Duke 390 2021 and इसको अभी आए हुए 10 दिन भी कंप्लीट नहीं हुआ है and the coolant is leaking. Let me show you. यार स्प्लेंडर वाले अंकल कैसे खड़ा कर दी गाड़ी. Let me show you. Can you see that? There's a coolant leak हो रहा है. I don't know how. I don't know why. So let's get to the service center and get it fixed. यार why can't KTM? मुझे लगा था कि I'll be one of those guys से KTM में कोई प्रॉब्लम नहीं आए. But I guess I'm also like every other person. हाँ तो भैया देखो, जो मैंने गाड़ी चलाई है आज वो स्टूपिड था, that was idiotic, but I was wearing all my safety gears and I have years of riding experience. So please don't be an idiot, don't try to copy the style I ride. भाई सेफ रहो, जिंदा रहोगे तभी तो मेरी वीडियो देखोगे, है कि नहीं? And I take full responsibility of my action. So please कोशिश करना, कॉपी मत करना प्लीज यार, नहीं तो मेरे लग जाएंगे. Kilometers more for the first service and the full potential of the bike will be unlocked. Oh yeah! This thing gets full. So we have reached sector 16 boys. अब मुझे यहाँ पे ढूंढना है कि सेक्टर 16 में कहाँ पर है KTM का सर्विस सेंटर. I need a phone mount. नहीं माते, it's not eatable. Gau Mata thought it's some orange or shit. Where are you, KTM service center? Thank you. Okay, so we are at the KTM service center. सर जी, मेरी बात हुई थी मॉर्निंग में, पता नहीं किसी, ये कूलेंट ना इसका लीक हो रहा है यहाँ से, तो वो दिखवाना है. कूलेंट लीक हो रहा है सर जी, अभी 10 दिन भी नहीं हुआ है इसको कंप्लीट. इसमें कोई मेजर इशू तो होगा नहीं, मुझे लग रहा है मेजर इशू तो नहीं होना चाहिए. Really weird. यहाँ से देखिए आ रहा है उसमें, कि शायद इधर आ रहा है क्या ये. This is the original Duke 390. This took India by storm. Why is the legend? This motorcycle is a fucking legend. Legend?
थैंक यू सर जी, थैंक यू। Alright, ladies and gentlemen, boys and girls. So the KTM service guy said कि इसका जो कैप है, जो कूलेंट का कैप होता है वो थोड़ा लूज था, एंड ही चेक द कूलेंट बॉक्स जिसमें कूलेंट होता है एंड एवरीथिंग, बोला सब सही है, बस उसमें बस उसके कैप लूज था थोड़ा सा। आई डोंट नो, मतलब अभी तक तो ठीक था, कल ही हुआ ये अचानक से, मे बी समवन जस्ट यू नो, क्योंकि लोगों को उंगली करने की बहुत आदत है, तो क्या पता किसी ने उंगली कर दी हो, क्योंकि कूलेंट वाला जो वो है ना वो सामने ही है, राइट हियर, जहाँ से कूलेंट फ्यूल अप करते हैं, किसी ने छेड़छाड़ कर दी होगी, क्या पता यार। ये तो लोग बिना गाड़ी छुए रह भी तो नहीं पाते हैं। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद पीपल, पता नहीं क्या ही करना होता है। बट ऑनेस्टली द KTM सर्विस गाइज आर लाइक टू गुड। मतलब मैंने KTM की सर्विस पहले भी देखी है अपने दोस्तों के पास जो KTM उनके साथ जाता था, एंड आज भी दे आर सच नाइस पीपल ब्रो। With that said, I'll see you in the next one. Bye bye. Peace.